हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉग्निबॉट। आज हम बात करेंगे रोबोट्स के बारे में। रोबोट्स क्या है और व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स के यूजेस क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ रोबोट्स। रोबोट क्या है? रोबोट इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन, एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन जो कि बिल्कुल वैसा ही सेम काम करता है जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग करते हैं, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि इट डजंट रिजेंबल द अपीयरेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन लाइक मैनर में वो काम नहीं कर सकता। रोबोट्स के काम करने के अपने तरीके होते हैं, जिस तरह की प्रोग्रामिंग उनमें की जाती है, एंड ह्यूमन बीइंग्स के काम करने के तरीके अलग होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रोबोट एक ऐसे मशीन है जो कि ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही काम करते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड है। वो एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें जो भी फंक्शनिंग की जाती है वो बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं और उनमें काम करने के तरीके ह्यूमन बीइंग से थोड़े अलग होते हैं। नाउ ये रोबोट वर्ड कैसे आता है? सो इट कम्स फ्रॉम द ज़ेक वर्ड रोबोटा विच मीन्स फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर मीन्स ऐसा लेबर, जैसे जो भी मजदूरी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेबर। सो ऐसा एक मशीन, ऐसा एक लेबर जिनको जबरदस्ती काम करने के लिए फोर्स किया जाता हो, सो दैट इज फोर्स्ड लेबर एंड दैट कम्स फ्रॉम वर्ड रोबोटा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू रोबोट्स डू। रोबोट्स क्या करते हैं? Like suppose let us take an example. If our job is to tighten one screw on any toaster and you have to do this toaster after toaster, then day after day, month for months or for years, but this job, this repetitive task can be done by robots better as compared to humans. अगर किसी भी एक repetitive task को अगर humans को करना हो, so that is less effective as compared to robots. And robots ऐसे भी जगह पे काम आते हैं जहाँ पे like nuclear industries या chemical industries, ऐसे जगह पे भी काम आते हैं जहाँ पे humans के लाइफ को ज्यादा रिस्क हो सकता है। एंड ऑल्सो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर लाइक फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इफ दे हैव लॉस्ट देयर लेग्स और आर्म्स, सो रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज वेरी इफेक्टिव फॉर दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स की क्या हिस्ट्री है? सो द वर्ड रोबोट सीम्स टू बी वेरी मॉडर्न, बट द एविडेंस सजेस्ट that the automation were created in ancient Greece and Rome, and that was used for the toys to the parts of different religious ceremonies. In 320 BC, Greek philosopher Aristotle made this famous quote that if every tool, when ordered or even of its own accord, could do the work that befits it, then there would be no need either of apprentices for the master workers or slaves for the lords. In 1495, Leonardo da Vinci sketched plans for a humanoid robot. In 1700 and 1900, a number of life-sized automatons were created, including a famous mechanical duck that could crane its neck, flap its wings, and even swallow food. Then in 1913, Henry Ford installs the world's first moving conveyor belt based assembly in his car factory. A Model T can be assembled in 93 minutes. Then in 1920, the word robot was coined to describe machines that resemble humans in his play called Rossum's Universal Robots. And the play was about a society that became enslaved by the robots that once served humans. Then next in 1932, the first true robot toy was produced in Japan. The Lilliput was a wind-up toy which walked, and it was made from the tin plate and stood just 15 centimeters tall. In 1937, Alan Turing releases his paper on computable numbers, which begins the computer revolution. In 1941, legendary science fiction writer Isaac Asimov writes the short story Liar, in which he describes the 3 laws of robotics. So his stories were recompiled into the volume I, Robot in 1950, later reproduced as a movie starring Will Smith. So the 3 laws of robotics were: first law, a robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Then the second law of robotics is
A robot must obey any orders given to it by human beings except where such orders would conflict with the first law. And then the third law is a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second law. Then next, in 1950, Alan Turing proposes a test to determine if a machine truly has the power to think for itself. To pass the test, a machine must be indistinguishable from a human during conversation. It has become known as the Turing test. Then in 1954, the first programmable robot arm was designed. This later became the first industrial robot, completing dangerous and repetitive tasks on an assembly line at General Motors. Then in 1957, the Soviet Union launches Sputnik, the first artificial orbiting satellite, which marks the beginning of the space race. In 1969, the US successfully used the latest in computing, robotic and space technology to land Neil Armstrong on the moon. In 1977, the first Star Wars movie is released. George Lucas' movie inspires a new generation of researchers through his image of a human future shared with robots such as the now famous R2-D2 and C-3PO. Then in 1986, the first Lego-based educational products are put on the market and Honda launches a project to build a walking humanoid robot. Then again, in 1998, Lego launches its first robotics invention system. 1999, Sony releases the first version of AIBO, a robotic dog with the ability to learn, entertain and communicate with its owner. More advanced versions have followed. Then in 2000, Honda debuts ASIMO, the next generation in a series of humanoid robots. Then in 2004, Epson releases the smallest known robot, standing 7 cm high and weighing just 10 grams. The robot helicopter is intended to be used as a flying camera during the natural disasters. Then in 2005, researchers at Cornell University built the first self-replicating robot. Each robot is made up of a small tower of computerized cubes which link together through the use of magnets. Then in 2008, after being first introduced in 2002, the popular Roomba robotic vacuum cleaner has sold over 2.5 million units, providing that there is a strong demand for this type of domestic robotic technology. So this was about the history of robots. Now, अब robots के हम use क्या करते हैं? So what are the uses of robots and in which fields the robots are used? Now next, where the robots are used. Robots के uses कहाँ पे हैं? So robots, अगर हम किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री की बात करते हैं तो किसी भी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स की यूज होते हैं, देन उसके असेंबली एंड पैकेजिंग में यूज होते हैं, देन ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्ट. अगर हम मेडिकल फील्ड की देखें, देन फॉर सर्जरीज रोबोट्स आर यूज. देन रोबोट्स के यूज अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी बहुत वास्ट यूज है रोबोट्स के. देन ऑल्सो फॉर लैबोरेटरी रिसर्च एंड देन ऑल्सो फॉर मास प्रोडक्शन. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. मास प्रोडक्शन अगर हमें इंडस्ट्रीज में करनी होती है, सो फॉर दैट द रोबोट्स आर यूज्ड. रोबोट्स आर यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स. So the 6 most common type of robots are autonomous mobile robots, which are also known as, or we can say abbreviated as AMRS, automated guided vehicle, abbreviated as AGV, articulated robots, humanoids, then cobots and hybrids. So this video was all about what is robot, then what are the different types of robots which are most common, and also the uses of robots, that where the robots are commonly used, and basically the history of. So आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.